salam karenge, right? So and then we get into Rawanee pods. So yeah. ठीक है. Right, So we are let us recording. know, Abid, when you've started. We are recording now. Go Hi, ahead. Ismail. Hi Welcome to Dinesh, how are Rawanee you? pods. Good. 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 How are you? Thank you. Good. How's the 26th of December coming along for you? 26th of December is coming along well. कुछ movement है, मतलब basically we're shifting homes, तो उस लिहाज से भी खासा moving चल रहा है. So last weekend, 2 weekends have been during that. Plus पिछली रात को और से पिछली रात को भी there were a couple of rehearsals for an upcoming shoot. So वो भी interesting aspect है. So it's been a busy day. Yeah. Right. No, firstly, thank you so much for joining myself and Abid on Rawanee Pods. Just a little about Rawanee Pods, you understand that, but for the audience, Rawanee Pods is something of an audiocast, a podcast, or a vlog का कुछ combination हम लेके चलना चाह रहे हैं आगे, और ये थोड़ा सा अपनी identity ज़्यादा पकड़ेगा as we move forward. But basically, these are supposed to be meaningful, light-hearted sessions with everyday creative profiles like myself, yourself. हम सब में एक creative छुपा होता है. Normally, हम जब creative profiles को सुन रहे होते हैं, आप उनके बारे में जान रहे होते हैं, so they're mostly popular celebrity profiles, right? But the idea of Rawanee Pods is to engage with and learn from everyday diverse creative profiles who inspire us in different ways, be it their hearts या उनका जो creative energies हैं या उनके creative ambitions हैं, creative ideas हैं. We want to learn from them about their creative journeys, उनके thoughts and ideas on different areas of life, different creative profiles, how they think creatively, how they express themselves creatively, and so on and so forth. So congratulations to you for being the first person Thank to you. be I part am of honored. That's I am on. honored to be part Rawanee of it. Pods series. But look forward to a very exciting conversation with you and to learn from you. Same here. Yeah, Abid, over to And you. sure, and the rest of you who are wondering who are these two guys, uh, uh, Ismail is a very creative person. The reason he's here is because he's a very talented photographer. एडवर्टाइजिंग फ्रेंडली से भी उनका ताल्लुक रहा है. फोटोग्राफी में अगर आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं then you would know what kind of person he is. He's more into architecture, visual aesthetics में बड़ा कमाल हासिल है इनको. उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी I think he's into music too. We can discuss about that later, but for now, let's keep it to photography. He started off his career with an advertising agency back in Karachi. Then I believe he moved to UAE, Dubai to be specific. And अब वहाँ पे ये क्या करते हैं इनसे जानेंगे. The whole idea of this conversation is to understand the behind the stage process and overall क्या चीजें होती हैं. मैं भी यही बात कर रहा था अभी before we started this podcast is when a photographer takes a photo या कोई भी आर्ट अगर आर्ट पीस भी बनाता है कोई आर्टिस्ट, तो एंड जो यूजर है, जो व्यूअर है, जो कंज्यूमर है, वो सिर्फ एंड प्रोडक्ट को देखता है. It's very important to understand because the community that we are dealing with or we are targeting are people who want to understand what happens behind the screens because they are aspiring photographers, they are aspiring musicians, artists, poets. तो ज़्यादा process पे focus होगा बजाय ये कि देखें कितनी अच्छी शानदार तस्वीर है. तो ये that's the whole idea and why we felt Ismail is the best person to have that conversation because Ismail ने बहुत transitions किए हैं लाइफ में जिस तरह नॉर्मली सब लोग करते हैं, मगर क्रिएटिव ट्रांजिशंस कैसे होते हैं, क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड थैंक यू सो मच स्माइल फॉर टेकिंग आउट टाइम टुडे. No, it's perfect. तो ये तो हमने सिर्फ जो है ना सेटअप किया था, असल में हम बिनेश का इंटरव्यू करने आए हैं, मैं और इस्माइल. ठीक है, that's the whole reason behind it. All right, so let's get started. Binesh, over to you. Binesh, you're on mute. Sorry, I was on mute. All right, so इतनी लंबी तमहीद मान ली है अब आबिद ने, तो मैं डायरेक्टली सवाल पे ही लैंडिंग शुरू करती हूँ. So Ismail, I think it would be nice to get to know about your
creative profile, for lack of a better word. Like, what's your creative muse? What's your creative thing? What creative interests and areas do you have? The profile, creative profile, Ismail Noor ka, if you can just tell us about that in your own words. so ये बड़ी वो मुश्किल होती है मतलब मुझे अगर कोई इंटरव्यू में भी पूछता है मतलब ये पहले जॉब इंटरव्यूज में भी लोग पूछते थे कि हाउ डू यू डिस्क्राइब योरसेल्फ बट ये खासा मुश्किल सवाल होता है बट the way I like to see is कि मतलब over time I've sort of tried and direction मैंने singular करने की कोशिश की है या at least 2-3 areas में करने की कोशिश की है and over time अब मुझे ये है कि मतलब I enjoy architecture, I enjoy interiors, I enjoy art documentation. So ये 2-3-4 areas हैं and I sometimes like shooting events also. तो ये कुछ 2-3 areas हैं जो which I really enjoy. In terms of photographing, in terms of my profession. Or I think architecture just sort of came naturally because मुझे sketching की भी थोड़ी बहुत आदत थी पहले and I was better at it before than now. So उस time पे भी I used to sketch straight lines and circles and shading and stuff like that and without having any proper understanding or the knowledge or education behind it. तो वो एक तरह से मुझे I think I just learned to see in terms of shapes and lines and इस तरह से so and when I started to take photographs तो मेरा पहला interest था वो skyline और buildings shoot करना था जो कि generally कई लोगों का वही शौक होता है. It's a fairly easy entrance into into the field because it does not ask too much and it gives you your own time to compose, to photograph, to it's your perception of how you see a building or how you see a skyline or cityscape or whatever. तो हाँ तो ये 2-3 areas हैं मेरा interest के और recently art documentation में भी मुझे मतलब तकरीबन साल 1.5 साल I would say कि I've started to develop an interest and when I say art documentation मेरा मतलब ये कि let's say if you are a painter or an artist or you create some work, there is a need to document it because it's a work of an art. It's work of art. So अगर वो कोई छोटी सी भी चीज है, it requires and it is it totally deserves a good photograph and documentation because वो हो सकता है कि आपने draw की है या आपने paint किया है. You will probably gift it to someone. You will probably sell it in an auction, or you will या कुछ भी हो सकता है. Maybe you kept it in your house and something happened or someone stole the works or whatever happened. Yeah. So there is always it's always good to have it documented in terms and a good documentation is equally important because it has to justify the amount of work that has gone into creating the actual work. So the light has to be nice, it has to look good, and it has to be looking in the documentation pretty much how it looks to your eye. Yeah. So हाँ मतलब ये 2-3 चीजें, sorry मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया लेकिन so हाँ. No, I get it completely. एक question मुझे था कि when people think about photography, बहुत सारी चीजें मुझे ये लगता है कि जो लोगों को अच्छी लगती हैं, जो खुद को खूबसूरत लगती हैं, उनकी लोग they like to take photos of that That's person or that element, that structure. तो why architecture? मतलब अगर आप 10 photographers उठाएं तो उसमें से 3 जो होंगी वो बच्चों की तस्वीरें होंगी,
चार फूलों की होंगी, and then nobody thinks about, not nobody, but people I follow, less people. they are more into those things. जिससे glamour associate किया जाता है. When you think of glamour, when you think of photography, जहन में फॉरेन चीज जो है वो बिल्डिंग नहीं वो आती. फैशन शूट आती है. हाँ, Yeah, generally yeah, fashion आता है, या you know, exactly. and I think that's why it's important to actually क्योंकि ये आई थिंक ये ओवर टाइम एक्सपोजर से आता है, बिकॉज कई लोगों के साथ मेरी भी डिस्कशंस हुई हैं, यू नो, शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था, लाइक यू सेड कि पहले एडवर्टाइजिंग में होता था मैं पहले, एंड देन व्हेन आई ट्रांजिशन में जब हुई, सो फर्स्ट चीजें जो मैं कर रहा था वो असिस्टिंग कर रहा था लोगों को, you know, helping out with the equipment, with the lights and carrying stuff, and you know, just being like a chota. So वो करते करते हुआ ये कि मुझे I sort of, you know, got exposed to a lot of different kind of people जो अलग अलग चीजें करते हैं, mostly like you said कि you know fashion photographers थे, और you know, but कुछ इनमें से आर्किटेक्चर थे, कुछ इंटीरियर्स वाले थे, कुछ एक दो स्पोर्ट्स वाले थे. So you know, so that sort of opens up your mind कि oh shit, ये खाली ये एक element नहीं है. Photography is like its own, like you know, कोई like any other field, उसके अंदर बहुत सारे subdivisions हैं. Specialists of हाँ, and there are so many subdivisions within it, and so many disciplines within it के, and ये भी एक assumption होती है generally कि if I'm a photographer, I can shoot anything. No, it's a very bad assumption, because each discipline of photography requires and has its own you know, requirements and basics. So मैं building shoot कर लूंगा शायद, मैं बच्चा shoot नहीं कर सकूंगा, मैं फूल shoot नहीं कर सकूंगा because बच्चे को shoot नहीं करिएगा. नहीं, बच्चे को shoot Not a good habit. So you know, so वो वाली चीज जो होती है कि and कभी कभार ये भी होता है ना कि जैसे a lot of times when you go and you know family gatherings वगैरह हो रही हैं, so अच्छा फोटोग्राफर तो किस मैगजीन में वो पिक्चर आएगी, किस मैगजीन में तुम्हारा काम छपता है, and when I say there is no magazine या मैं उन मैगजीन्स के नाम लेता हूँ जिनका उन्होंने सुना नहीं है, so there's always going to be this disconnect, because you know, it's a part of the thing. अच्छा ये बताओ कि when for example अगर आप बिल्डिंग्स की तस्वीरें लेते हैं या आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी में हैं, where subjects are mostly still, बिल्डिंग तो अपनी हाथ पैर नहीं हिलाती, Exactly. as compared to other people जो कि लोग living subjects का फोटोग्राफी करते हैं. Do you think is there any difference in the process? Absolutely. For instance, if you're shooting a building or a space in itself, तो आपको कुछ चीजें उसमें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे for instance what time of the day you shoot. You know, each time of the day presents the design in its own unique way. When we shoot buildings, we try and see what the architect's vision or thought process was. Just say you are asking about the thought process of the photo, right? So I'll just give you a rundown ke when we are shooting, so for instance a project, तो हम लोग क्या-क्या चीजें मांगते हैं client से, या क्या-क्या चीजें देखते हैं. So first and foremost, we try and find out के architect है कौन, number one. What does he or she stand for? Yeah, for instance, we try and find out if it's not John Novell, जैसे कि उसको हाथ लगाना ही मुश्किल है, जो कभी मिलेगा ही नहीं आपको. If it's a reachable, approachable person, then you try and set up a meeting. You find out you know, what was the vision behind designing this space. What are the elements that he or she has, you know, put inside it. क्योंकि हर प्रोजेक्ट जो वो बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग्स बनाते हैं या घर या विलास डिजाइन होते हैं,
each design goes through a various stages of process. What the owner will be and what the what the vision of the design is, and ये पूरी सारी चीजें thought process होती है. उसके बाद you see a building, a landmark building stood on the structure. वैसे जैसे जैसे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और ये वो सब होते हैं, उसमें तो इतना ज्यादा कोई ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं होता. बट जैसे इफ यू लुक एट बिगर म्यूजियम्स हो गए या कन्वेंशन सेंटर्स हो गए, मॉन्यूमेंट हो गए, सो उसके पीछे देयर इज सो मच थॉट गोइंग ऑन. सो इफ यू आर शूटिंग दोज, you try and get as much information from various sources, and then you find out कि अच्छा daytime में कैसे दिखता है, सुबह कैसे दिखता है, रात को कैसे दिखता है. Then you also think about कि how connected or accessible to general public it is. So sometimes in photos you will see कि कोई बंदा या बंदी कोई गुजर रहा है आगे से, या they're stood there. So उसके 2-3 पर्पस होते हैं. एक पर्पस तो evidently ये होता है कि we want to show basically a scale of the project itself, because human scale एक ऐसा है ना कि if you मतलब आप मैं जब देखते हैं तो we generally consider us as हम लोग की एक certain height होती है. So we measure and we see things in terms of how we are, like so when we see one person, जैसे बुर्ज खलीफा, तो बुर्ज खलीफा is it's 8 kilometers vertical building, imagine. So if you put a human beside it, you will have to stack so many of these. So एक human element का एक perspective ये भी होता है कि it gives you a sense of reference कि the structure, how big or how powerful or how big. Exactly. क्योंकि आप dimensions तो उसको बता सकते हो कि it's 3 meters high, 4 meters this, but nobody thinks in meters or scales. People see in terms of the how they are. और दूसरा उसका फंक्शन ह्यूमंस को इन्वॉल्व करने का ये होता है कि मतलब these are just observations, and it's not like कोई रूल नहीं है, but observations है. वो दूसरा purpose, the way I see it is कि it sort of gives कि for instance एक monument है तो उसमें if there are people passing by, तो it sort of shows कि how people interact with the space itself. क्या families आती हैं, क्या बच्चे बैठते हैं वहाँ पे, क्या अगर monument के around या statue के around कोई benches बनी हुई हैं. So so most likely होगा ये कि people will be sitting there, they'll be having coffee, tea, conversations. So हर design के certain elements होते हैं कि what people will be using this for. So एक element ये भी होता है कि you want to show कि how people are using the space in terms of the whole space. Building तो ऐसे तो बनी हुई है, but if people don't use it, then it's a structure, right? Yeah, it has to be inhabited by the people. Sure, yeah. एक चीज मुझे ये भी लगती है in architectural photography में, because you cannot control the environment. बहुत सारी दूसरे में तो you can bring them indoors, soft boxes लगा के आप सारे काम exactly. You can control the lighting, control the subject. But it's outdoor, natural light में ही काम करना है. Subject भी बेचारा आपकी कोई नहीं सुनने वाला. Because imagine इतने सारे लोग हैं आप. Yeah, so the only thing you have control on is yourself. इसके अलावा आपका किसी चीज का control नहीं होता. But usually when it comes to photography, लोग अक्सर यही imagine होता है ना कि नहीं ऐसे कर लें, ऐसे खड़े हो जाएं, light ऐसे कर लें. So most of the time they are controlling the environment to get that best click, which I believe is very different in your line of work. It's different. It's way different because हम लोग generally ambient settings के साथ काम कर रहे थे, जैसे you said. So उसमें if there's a art gallery, let's say museum है, so उसमें लोग जा भी रहेंगे, आ भी रहेंगे. You can't close a museum one whole day to photograph it because that's lost revenue. So nobody will allow that. So you have to work around. You have to be creative about choosing the right times, maybe कि किस time पे flow लोगों का कम होता है. So कभी कभार you decide on those things, कभी कभार you deliberately involve people कि उनको candid
ताकि आपको लोगों को स्टेज ना करना पड़े. लोग naturally जिस environment को use करते हैं, it shows in the photo actually realistically also, rather than मैं एक फोटो बनाऊं जिसमें एक बिल्डिंग है और इसमें मैं लोगों को पॉन्स की तरह सेट करूंगा. ये एक अप्रोच होगी. या फिर I'll just let the people be themselves and use the space how they use it naturally. तो वो automatically you know um, it just makes the photo more honest. But at the same time हम लोग ये करते हैं कि लोगों को place करते हैं कभी कभार अगर लोग इतने नहीं होते. So we tell the client कि यार we need about 10-12 people, and we will position them. कभी उनको बोलेंगे कि यहाँ से walk करके जाओ, कभी यहाँ से walk करके जाओ, यहाँ से walk करके आओ. So we just sort of get them going so that वो एक type का space से related movement or how people are using the stairs or how people are using the sidewalks and how people are sitting on the benches, trees, ये सब चीजों को भी लोग Real किस life तरीके से से. use कर रहे हैं. We can see that. Exactly. हाँ. Real So ये का basically life ideas होता है. Sorry. Right. I think जितना real life का look दे सकते हैं उतना Exactly. authentic Exactly. आप कर सकते हैं. I think that's what matters. अच्छा, I was thinking that you were talking about the whole process, and it was interesting to go through and see how you perceive it and how you go about it. You talked about learning the creative inspiration and vision of the people who made those buildings, right? I was just intrigued to find out what is it that creatively inspires you? Where do you draw your inspiration from? And I guess broadly also, for whatever your creative pursuits are, all those pursuits that you have, but also architecture की अगर हम बात करें, so what sort of architecture structures, buildings inspire you a lot more than others? Okay, so मेरे लिए naturally ये easy होता है. मतलब I sort of like buildings and structures which are not like super कोई इतने tall, इतने ज़्यादा gigantic होने जरूरी नहीं है. The idea is कि वो किस तरीके से design हुए हैं. They can be even simple, but they can be functional. Sunlight को use किस तरह से किया है वो लोगों ने. Beams और lines, columns किस तरीके के हैं. So ये कुछ चीजें होती है कि you just see a building and then you go like यार I wish I can photograph this somehow someday, because यहाँ पे shoot करना buildings को भी थोड़ा सा मुश्किल है because you have to get permits a lot of time. You can't just go with a camera and set it up because rules and regulations होते हैं हर जगह के. Privacy and all. So exactly. So a lot of times you see a building and then you go like yeah, I want to shoot this, I really like this, but I don't know how. तो कभी कभार ये हो जाता है कि एक दो जगहों पे मुझे शूट करना था and मैंने उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स को ढूंढे ईमेल एड्रेसेस और उनको ईमेल किया कि can I come over and shoot for free, and because मुझे पता है कि उन्हें तस्वीरों की जरूरत तो नहीं है, लेकिन वो मुझे इसी केस में अलाउ करेंगे कि मैं बोलूं कि मैं फ्री में करना चाह रहा हूँ for my portfolio whatever. So एक दो जगहों ने मना कर दिया clearly कि नहीं, we have some renovation going on and we will get back to you. और एक दो जगहों ने कुछ भी नहीं बोला, जवाब ही नहीं दिया. और एक दो जगहों पे मैं खुद ही चला गया था एक दिन और खींच ली फोटोज और निकल गया इससे पहले कि सिक्योरिटी वाले ने मुझे पकड़ा. so it's always like, so ये cat and mouse वाला गेम है. ये public spaces capture करने का ये एक element है which you have to be really sometimes. And for a person like me, जिसको ये सब इतना लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं है, कि 10 लोगों से बात करूं और ये करूं वो करूं, ये कभी कभार इनहिबिटिंग होता है थोड़ा सा कि that you have to get so many approvals and so many things in order before actually going there. And then once you even get there, the security will ask you and वो बोलेगा, वो wireless करेगा to his or her supervisor, and supervisor will say, okay, do you have a permit? And I would say, no, I don't have a permit, but I have an email from this and this person. So वो सारा जो it just sort of drains your energy also. Okay,
वो जो आधा पौना घंटा जो waste होता है, which is nothing, you know, it's just you just stand there and wait for people to do nothing. So ये जो है एक element है ना, so ये एक थोड़ा सा turn off element है, but again for each discipline, I'm sure के आपके मेरे जैसे Abid does a lot of training and this stuff as well, so a lot of times ऐसी कुछ चीजें भी होंगी उनके भी, you know, environment में which sort of inhibit you and you just feel like, yeah, can we get over this? So that we start off, you challenges. Exactly, हाँ ये चीजें होती हैं. So हाँ, sorry, मैं आपके सवाल पे मैं वही था कि so हाँ, मैं बस वो दो चार चीजें थोड़ी I don't have a specific set of rules के ये building will qualify for me, ये वो it's just like sometimes you see even a building which not many people have seen or is not even famous, but you sort of just pass by and you like it just because you like it, you know. So तो ऐसे कौन सी कोई 4-5 बिल्डिंग्स आप चलें 2-3 ही बता दें, मतलब you know, and I'm not just talking about UAE, you know, like buildings that you really like, you look at them and you're like wow. So वो कौन सी ऐसी हैं? So एक तो इधर अबू धाबी में ही एक बिल्डिंग है, I would say कि ये top of the mind हर किसी के होती है, but I as a photographer मैं भी जितनी बार भी उस बिल्डिंग में जाता हूँ, I always find new places to, you know, discover and shoot, and that's Louvre Abu Dhabi. That's a really nice structure, and even like मैं वहाँ तकरीबन 2-2.5 साल से जा रहा हूँ because they are our clients as well. So every time I go, sometimes the sunbeam is, you know, cutting through the roof and it's casting a different sort of shadow onto the floor, and you know, it's always like it's just the lighting and it's just the overall openness of the space, and you know, it's a really nice place to you know, you just go there and you go like every time you find something new. Interesting. It's I like the fact that there's a natural symphony of man-made and nature. तो जो सनलाइट है वो और जो इंसान ने एक बिल्डिंग बनाई है वो मिल के एक नया शाहकार पैदा कर देते हैं. I think that's the marvel, right? देख रहे हो exactly हो रही है माशाल्लाह. और एक दो और बिल्डिंग्स कौन सी मैं बोलूं, I don't know, it's really hard कभी कभार when you ask something on the spot, मेरे RAM जो है ना वो slow होती है. It takes longer for me to load. Conversation में एक दो बिल्डिंग है, ये होता है, ये मेरे साथ अक्सर होता है. चलो ठीक है. So if I think of something in the middle, I will just interrupt and I will say कि हाँ ठीक है, I remember this. Thank you for accommodating this. Thank you. So लेटेस्ट कोई क्रिएटिव इंस्पिरेशंस लेके आप चल रहे हैं आजकल, कौन से प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है या कोई लेटेस्ट इंस्पिरेशन दैट यू वांट टू कैप्चर? हाँ, एक करंटली मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है. वो it's sort of related to the documentation. एक my boss's friend, he is a private collector. तो वो basically करता ही है कि he's a pretty rich guy. So what he does is so वो जैसे online auction houses होते हैं ना, जैसे Sotheby's हो गया, Christie's हो गया, so वहाँ से he acquires albums and photos from, you know, 1800 and 1850s and 1900s, and those are basically mostly वो Palestinian, Jordanian, और Middle Eastern कुछ areas से related photos है, कुछ Levant like the Turkey, Cyprus, इस area से related है, and so there are about 8 or 9 books and albums and films and cases, and so it's like his private collection. तो वो मैं पिछले तकरीबन 3-4 माह से document कर रहा हूँ. It's a really nice therapeutic experience because you have to do the whole thing
काफी slow सुकून से करना होता है because it's really old materials and and images and books and albums. So I have absolutely come to love that project. Initially मुझे बहुत थोड़ी मुश्किल हो रही थी because sometimes because generally हम जब shoot कर रहे होते हैं चीजें तो हम लोग we are sort of going through the flow, but इसके लिए you have to slow down everything because each work or sometimes each page requires different sort of lighting or modification of the lighting. So it's a slow process, but it's a very therapeutic process. And at the same time, मेरे लिए बहुत interesting वो भी चीज़ है कि I get to see a lot of so many old places or जैसे कुछ चीजें मैंने पैलेस्टाइन में related चीजें कुछ देखी के जैसे हाँ I haven't gone as well, but at the same time वो pictures हैं from 1800s and 1900s. So कुछ उनके पुराने mosques की हैं, कुछ synagogues की हैं, कुछ कुछ streets की हैं, कुछ coast की हैं, कुछ पुरानी buildings की हैं. So these are like like these when you open one album, it's like time travel. It's like you go over and over, keep changing the pages, and you are looking at so many things that you don't know what to do, and you just love it. So वो project में बहुत interesting लग रहा है कि अभी मैं last book पे हूँ उसके और अभी जो last book मैं कर रहा हूँ that is mostly related to Turkey or mostly Istanbul and close by cities. So and it's so fascinating to see के like 1890s or 1900s में भी वो जो Galata bridge जो है वो exactly अभी भी वही passage है और वो जो एमिनोनो का बे है वो डॉक है वो भी वैसा ही है अभी तक just the materials have changed. उस टाइम पे वो सिर्फ wood के चीजें थी because bridges wood के होते थे wood और steel के अब now it's asphalt and और इसके अलावा like Istanbul and Turkey and these places are so magical in their own way as well के you even if you see these older photos and you see them now you can always instantly go back to the current times and it's like a constant time travel happening. So I really like that project right now that I'm doing and I'm absolutely loving it. Fascinating to hear about it. I think we'd like to see more of that work whenever that happens. If you can share with I wish कि मैं दिखा सकूं फिलहाल लेकिन because it's a private collection तो मैं I don't know if it's but it's for me being privileged to be able to see and access all that. It's really nice and it's yeah amazing. I don't know what to say. I don't know, I'm kind of jealous right now. Exactly. You should be. That's the whole idea, I believe. Now there's one thing I will honestly it's more of a comment. So that's the thing about architectural photography. It's a mental vacation. Exactly. When you look at something, you mentally go to that spot, you live that and scene. I love that term, mental vacation. That's the whole idea of photography, right? Sure, go ahead. पता नहीं मैंने भी कहीं से चुराई होगी, I'm sure. I'm not that smart. So, but coming back to the point, some people think that why architectural photography? What's the whole point? And plus the things that you are doing, essentially, if any layperson looks at it, मुझ जैसा बहुत ही कोई नालायक आदमी होगा अगर, तो वो सिर्फ यही कहेगा कि you are just taking photo of a photo. What's the fun in it? But seriously, होता है ऐसा. ये होता है. But so what people like me don't get it, right? Yeah, and what people like me don't get कि भाई उसकी जो history है, उसकी जो story है, and not everything can appeal to everybody. That's the thing with art. एक चीज आप बनाते हैं, आपको अच्छी लगती है, you just look for people who are
on the same wavelength, Connecting to it. artistic हाँ, wavelength. हाँ. Yeah. तो खैर कमिंग जो मुझे एक बड़ा सवाल अभी आया था, मैं इससे पहले भूल जाऊं, मैं जल्दी से कर देता हूँ. वो ये है कि what are the commercial applications of architectural photography? एक तो चलो ठीक है, अगर if there's a builder who is trying to build something, a monument or residential or things like that, तो उनके अपने जो collateral है, brochure and all that. इसके अलावा is there any commercial application to this? There is. So एक तो ये हो गया कि जैसा कि you pointed out कि if the developer, him or herself or themselves want to document their own space, which is generally the primary purpose कि जब कोई building ready हो रही होती है या कोई जगह complete हो रही होती है, so they want to document it and make it a part of their portfolio. कभी कभार ये भी होता है कि if somebody is coming up with books or journals or publications and they need specific images of a specific place, and if you have it, you can sell the rights to use it. इसके अलावा which I am still I am trying to get better at it is that you can always shoot for stock imaging. तो stock images जब आप बोलते हैं तो उसके mind में ख्याल ये आता है ना कि वो जो Getty images पे जाओ या Shutterstock पे जाओ तो अजीब-अजीब से लोग पोज कर रहे होते हैं कुछ अजीब-अजीब चीजें. But at the same time you have Getty का ही Getty को भी आप sell कर सकते हैं, but उसमें you just have to keep an eye, and there are so many things जब हम लोग upload कर रहे होते हैं कोई चीज तो उसमें building के they ask for certain documents to upload it. जैसे अगर मैंने आपकी फोटो ली और मैं Getty Images पे गया और मैं अपलोड करने की कोशिश की मैंने, तो they will ask me for a release form कि आपको पता है कि आपकी फोटो ऑनलाइन जा रही है, ठीक है, and you have no issue with that. So इसी तरीके से when you shoot a public space or when you shoot a monument or something, you have to get documents related to those as well. Oh. तो ये एक challenge है थोड़ा सा. हाँ. I don't So know. I thought you can't just take out a go- camera and No. Run with it. So basic general rule ये होता है कि अगर जैसे मैं for instance मैं लूव अबू धाबी की कोई फोटो खींच के if I try and upload it to Shutterstock or Getty Images, so वो पूछेंगे for documentation, for documents related के who from the designers or who from the institution has allowed, और उसके कुछ formats होते हैं, कुछ paper work होता है. So general rule ये होता है कि अगर किसी भी space की आपको entrance fee देनी पड़ रही है, then you have to get permissions for that. So और अगर कोई if there's a structure जो मुझे चलते फिरते let's say मुझे कोई building नजर आ गई and I just shot that building and I wanted to use that building, उसके लिए भी मुझे architect, developer ये सब के approvals चाहिए होंगे. हाँ, if it's an abstract shot, let's say वो बहुत zoom होके एक window पे खाली गया हुआ है और खाली window पे light hit हो रही है और या कोई texture बिल्डिंग का कुछ खाली टेक्सचर नजर आ रहा है, बट आई कांट से कि ये कहाँ हो सकती है बिल्डिंग, अगर वो आइडेंटिफाइबल नहीं है देन इट्स फाइन. कोई भी आइडेंटिफाइबल ट्रेट आ जाता है ना, देन यू हैव टू इन्वॉल्व अदर पार्टीज रिलेटेड टू इट, बिकॉज इसका पर्पस ये है कि लेट्स से मैंने एक पिक्चर बहुत अच्छी दी और बिक गई वो बहुत अच्छी प्राइस में, मैं तो पैसे बनाते जाऊंगा, बट व्हाट बेनिफिट विल इट गिव टू द डेवलपर और द आर्किटेक्ट? काम तो उनका है ना, मेरा तो काम नहीं था वो, but I just took a photo. But for justifiable reasons and for for logical flow, ये यही होता है कि मतलब if you're earning from it, it has to go to every party related to it, not just you. You were the last one. So सिर्फ तुम्हारे से पहले आर्किटेक्ट, तुम्हारे से पहले डिजाइनर्स, उसके पहले मार्केटर्स, उसके पहले सब कुछ लोग, बहुत लोग इन्वॉल्व हुए हैं उसमें.
So वो पूरी chain है. एक चीज So होती that है get कि determined. sorry, go ahead. Sorry, Abid. So I'm just saying, how does that get determined? You know, a photographer का इतना, let's say, percentage of, you know, whatever the commission or earnings. नहीं, ये ऐसा नहीं होता. Honestly, मेरी अभी तक कोई भी ऐसी image जो identifiable है, वो मैंने upload अभी तक accept नहीं हुई है. तो because you have to have that paperwork and stuff. So which I have been too lazy, and you know वो चीजें gather करना एक अलग headache है, you know. It's a long process. So you do it only when you So if you were talking about the viability, the financial viability या commercial aspect, तो उसमें एक तरीका तो ये भी है कि जैसे you know you sell rights and then other people buy and then you know that's how you make money. एक और तरीका architecture का ये हो सकता है that if you happen to live in a place which is filled with interesting buildings and structures, so you shoot them and you make prints out of them. You set up a website where you know where you sell your photography. So ये एक बहुत अच्छा aspect है, you know, which मेरे 2-3 जानने वाले मतलब acquaintances हैं, friends हैं, network में हैं. They have their own website and they shoot stuff, they put it up, people buy it, people buy their prints, and वो घर में जैसे आप you know घर में office में जैसे लगाते हैं वैसे you can buy. So every time a person buys a print, आपको certain amount आपके पास आता रहता है, you know, and it's based on your pricing. There used to be a thing, I'm not sure abhi hoti bhi nahi hoti, I'm not getting the name. It's more of architectural catalog sort thing, basically a photo book. मगर वो थी क्या 100 mosques मेरे पास पहले किसी जमाने में थी, वो पता नहीं अभी होगी नहीं होगी. तो 100 mosques of some place, किसी कोई मिडल ईस्ट का कोई वही था, आई थिंक ओमान था. 100 mosques of ओमान. तो उसमें कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ it's a full A4 size photos mosques की, और एक mosque की जो है वो तकरीबन कोई 5-10 उसके अंदर फोटोज होती थी. Exactly. मगर ऐसा कोई मतलब the overall experience was so amazing. It was just a photo book, once again looking at photos. अब तो खैर सब digital हो गया है, तो but that sheer experience of you know flipping pages like a magazine and going through photos was amazing. अगर I think अगर ऐसा भी कुछ कुछ चल जाए, like for example if as a photographer, yeah, if somebody wants to make a photo book and sell it somewhere, तो आर्टिस्ट को भी कुछ फायदा होगा, keeps him or her motivated to do more work. Exactly. मैं सॉरी एक बात काटूंगा. मेरा जो I think अभी मुझे याद आया कि जो मेरा जो first interaction था photography से और photographers से related, वो agency days में था, और वो ये था कि हम लोग का एक client था Deutsche Bank, जो जर्मनी का बैंक है. उसके it's a very multinational, बहुत basically वो लोग की clientele जो है basically it's capital banking and you know private banking. तो उसमें वो हमसे आपसे तो बात करते ही नहीं है, वो लोग बात करते हैं गवर्नमेंट से और you know a very high net worth individual से. So they were coming up with a 50-year celebration, Deutsche Bank की थी पाकिस्तान में. So उसके लिए they commissioned us to come up with a coffee table book, and उसमें उन्होंने 14 या 15 पाकिस्तान के photographers के works को showcase किया, and it was about I think about 100 photos or 120 photos I think in total. So उसमें जैसे 2-3 नाम मुझे जो याद आ रहे हैं, वो टप्पू जवेरी था, यासिर निसार था, और 2-3 और इस तरह के फोटोग्राफर्स थे जिनसे मेरा पर्सनल इंटरेक्शन हुआ था. And I remember के वो CDs उन दिनों जो है ना वो हाई-रेज़ फाइल्स जो है ना वो CD पे बेचते थे. So एजेंसी आई थी, CD मेरे पास, and it was वो जनरल वो नहीं, वो पहले
ग्रीन या पिंक कलर की वो प्लास्टिक फिल्म टाइप की कुछ होती थी उसके अंदर डली हुई थी वो एंड उसके ऊपर लिखा हुआ था टप्पू जवेरी 20 images blah 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 and that was my first interaction and then जब वो book develop हो रही थी design हो रही थी and I was seeing these photos being placed into really nice design layouts and साथ में in text है थोड़ा सा picture in picture thoda element and I was like wow, I mean these people shot this stuff and there's going to be people who will be looking at this book and looking at this work and they are getting paid for each image so us time pe the thought just ran back in my mind koi ऐसी कोई thought नहीं आई थी कि मुझे कि wow yeah I can do this क्योंकि it just ran my mind कि yeah wow I mean this is a nice profession like this guy is making money just by having something that he shot 10 years back and he's making money for that so ये बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट लगा था मुझे एंड फिर नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड ख्याल आता है कभी कभार कि वाओ मे बी वहां से मेरा थोड़ा सा शौक सबकॉन्शियसली थोड़ा सा डायरेक्शन चूज हुआ था so talking about flashback अगर if you were to give somebody an advice जो आज starting out today कि भाई क्या करें इस्माइल साहब मैं भी बड़ा एक्साइटेड हो गया हूँ तो क्या कहूँ सबसे पहले कैमरा ले आऊं जाके नहीं I think the best thing to do will be to or just use your phone camera we are so lucky to live in a time कि हमारे cameras phone के इतने powerful हैं और इतने capable हैं कि they can take photos so nicely you remember हमारे cameras कैसे होते थे वो 3GP वीडियो फॉर्मेट्स होते थे इतना घटिया क्वालिटी होती थी एंड स्नेक गेम होता था उसके अंदर दैट वाज माय फेवरेट स्नेक होता था हाँ बट इन टर्म्स ऑफ द फोटो और द वीडियो कंटेंट वो कितना लिमिट बट वो टेक्नोलॉजी बिकॉज वही बात है ना टेक्नोलॉजी कीप्स गेटिंग बेटर विद टाइम एंड आई थिंक फॉर नाउ द बेस्ट थिंग इज कि योर फोन्स your tablets are so powerful already you just have to I think main चीज यही है कि you just have to define and look for aesthetics के लोग किस तरीके से कुछ हैं कुछ photographers हैं जो they don't even use any DSLRs or professional or mirrorless cameras they just shoot on iPhone so and iPhone's resolution is good enough कि तुम A4 print और या उससे बड़ा भी print निकाल सकते हो imagine so it's such a powerful tool so तो let's say main चीज मैं तो ये sorry go ahead so no. I would just say कि मतलब if you are interested in shooting something and if you like photos just generally it doesn't have to be कि मैं अभी से determine कर लूं कि मुझे पौधे शूट करने हैं मुझे लोग शूट करने हैं मुझे बिल्डिंग शूट करनी है मुझे आर्किटेक्ट मुझे आर्टवर्क शूट करने हैं I think it's a really hard decision to make because it comes with time and your interest and अगर तुम कोई particular चीज शूट करोगे ही नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि whether you like it or not right so for instance मेरे लिए I do not enjoy मतलब मैं शूट कर लेता हूँ अगर फैशन रिलेटेड या ब्यूटी शूट हो मैं कर सकता हूँ प्रोडक्ट शूट मैं कर सकता हूँ बट आई डोंट लाइक इट and I'm not good at it I can clearly say that because I know this is not my jam so there's just so these are the things you only find when you actually do things right तो तुम्हें जब तुम करोगे तो पता चलेगा so वही वाली बात है कि if you like taking photographs if you are starting up just shoot anything just shoot everything and then over time not that way so just shoot just even like if you're shooting food if you're shooting people on the streets if you're shooting just people doing the normal routine mundane activities just record just keep doing stuff
and then inside वो basically आपका funnel process start होता रहेगा जो इसमें आप filter करते जाओगे कि okay, I like this, I like spending time on this, but I don't like this and too much, you know. So ये उस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीजें narrow down होती जाएंगी कि you know, and then it will single out or it will just go into 2 or 3 4 your key interest areas, and I think ये बहुत important है क्योंकि आपका जो फोकस है ना आपको तब मिलता है अपने काम में कि जब और मजा भी तब मिलता है जब you are, you know, when you are good at 1 2 or 3 things, not good at 100 things. You can't equally like you can't equally like 10 things at the same time, right? So it's so good to have like 2 3 4 areas of interest कि यार this is what I like, this is what I love, this makes me feel good, and so इस तरह के 2 3 अगर आपको चीजें मिल जाए ना, so sorry Maria. Sorry, no, मेरा laptop actually, sleep पे चला गया था. we're actually getting into that direction जो मैं सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ. So वो ये है कि आपने अभी हमने बात कर ली कि what you're sort of good at, right? या what you enjoy, what you naturally like. So आप उसकी pictures देना शुरू करते हैं, ठीक है ना? But I think ikigai का जो concept है, right? कि what you're good at, what you love, but then there's also what the world needs and what you can be paid for. Yes. So उसकी intersection अगर हो जाए तो brilliance हो जाती है, right? तो brilliant है ना, वही बात है ना. तो वही उसी को अचीव करने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज है, you know, ये परसूट, ये जो सारी परसूट है कि आप भूखे भी ना मरे, आप खुश भी रहें और you know you just or honestly for I've seen a lot of people who don't make a lot of money but they're happy, so that's fine. I mean, you know, तो इसी में अगर तो इसी में अगर आपने ये डिटरमाइन कर लिया भाई आप इसमें खुश हैं, आप ये अच्छा करते हैं, बट फॉर पीपल हु एस्पायर टू बी यू नो फोटोग्राफर, स्पेशली आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइन में, या अगर हम स्पेसेस ना भी रिस्ट्रिक्ट करें, आपको क्या लगता है कौन से अपॉर्चुनिटी एरियाज है मार्केट में या इमर्जिंग स्पेसेस हैं? Again, it's different things for different people, but at the same time, you understand the market also, right? So if they sort of develop their expertise in those spaces, that's what the world perhaps needs right now, maybe going forward. And it'll be nice if they can pursue this interest in those spaces. So kuch hai usme thoughts, recommendations? I think basic I think once you develop the aesthetics, मेरे ख्याल से एक approach जो जरूरी है वो ये है जो हम लोग के पास नहीं होती थी when we were young. एक चीज aesthetics की exposure और दूसरा ये कि counseling. So I think to know and to speak to different sort of people के जो different काम कर रहे होते हैं, that's very important because that's how you get a taste of कि यार ये इसका काम मुझे अच्छा लगता है but I don't like this, I don't enjoy that. तो ये जरूरी है कि you expose yourself to as many sources as possible ताकि वो एक टाइप का आपको शॉर्टकट मिल जाए कि you know, क्योंकि आप life is too short to touch and do everything. So अगर जहाँ hack मिल सकता है you know, to find or to accelerate थोड़ा सा कि मुझे 2-3 चीजें जल्दी पता चल जाए, why not? So और बेस्ट चीज यही है अभी आजकल के टाइम में तो कि you know, you have Instagram, you have Pinterest, and you have so many other platforms के जहाँ पे you can just constantly look at, you know, inspirations and you know what people are doing and stuff. So I think वो एक जरिया है कि where you can pinpoint and identify कि मुझे ये चीजें अच्छी लगती हैं या मैं इस एरिया में जा सकता हूँ and this would be fruitful and this is what the world also needs. I think if you develop decent amount of video editing skills, that is going to keep you happy for a while now because abhi har cheez aista aista, you know, video content or is pe ja rahi hai. So it's essential ke, you know, if you know a bit of basic editing, basic shooting, and shooting ke liye aapko you don't need a really big camera or something. You can shoot with your iPhone.
iPhone's footage is pretty good, like, you know, and then you can get a bit of hands-on experience with maybe अगर कोई आपका दोस्त है, आपकी दोस्त है कोई जो यूज करते हैं Adobe Premiere वगैरह या After Effects तो sorry graphics के लिए Premiere यूज करते हैं, या वो Apple का कौन सा है movie something iMovie or something, if you can, you know, get a bit of hands-on experience to those things, I think it's a value-added thing for anyone. जैसे marketing में भी you know, young people जब आ रहे होते हैं, so कोई ऐसे होते हैं जो they don't know कि you know कि photo कैसे खींचते हैं, वीडियो कैसे एडिट होती है. एजेंसी में भी ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें जो पिछले तकरीबन 3 4 5 साल से काम कर रहे थे, but they did not know कि अगर मुझे फोटोशॉप पे कुछ चेंज करना है तो कैसे होगा. एंड फॉर मी दैट वाज बैफलिंग बिकॉज मैं क्लाइंट के सामने जाके एक चीज बेच रहा था, एंड इफ आई डू नॉट नो कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ये मैनिपुलेशन में पॉसिबल है या नहीं, आई एम नॉट डूइंग माय जॉब. बिकॉज अगर क्लाइंट मुझे बोलता है कि यार आई वांट यू टू एडिट दिस गाय आउट ऑफ दिस बैकग्राउंड, मैं हाँ बोल के आ जाऊंगा, मैं क्रिएटिव के पास जाऊंगा. And if they say, okay, are you stupid? Or, you know, why did you agree to this? Or where will I be? Like, you know, for as a person, you know, it's important for me to know कि एक चीज possible है भी या नहीं, या करनी है या नहीं. I should be able to fight back to the client कि, you know, okay, is it necessary? Is it possible? ये सब चीजें मुझे खुद पता होनी चाहिए to be able to you know, speak to the client before going to the client. तो you know, ये सारी चीजें जो है ना वो आपको जैसे ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो हैं, ये इलस्ट्रेटर फोटोशॉप छोटे नहीं है, सॉरी, they are giants, they are. So अगर इनकी कुछ 2-4 चीजें भी थोड़ी बहुत पता होती हैं, या फोटो कैसे खींचते हैं, एलिमेंट्स, यू नो, क्या क्या चीजें कंसिडर करते हैं फोटो एक बनाने में. You don't have to be an excellent photographer or a professional photographer to be able to identify कि ये फोटो अच्छी है या बुरी, या you know, you look for some things जो which appeals to you, and you don't have to be a photographer to do that. You just have to be open in terms of your mind and your heart के, you know, के how receptive you are to something, and that's it. I think that's a very good I'm not point. sure if it answered. No, spot on, I would say. एक चीज मुझे भी बड़ी वो करती है कि the two things, there's creativity and then there's skill. कुछ लोग होते हैं दोनों extremes पे खड़े होते हैं. Some people believe वो skill तो वो tool तो कोई भी operate कर लेता है. I'm not a tool operator. This is one thing that I heard back in client service days. तो tool operator तो नहीं हूँ, मैं तो creative बहुत ही चीता आदमी हूँ. And then there's another extreme, कहते हैं कि ये photographer कुछ नहीं होता, जब post में देख लेंगे सब कुछ, we can do anything, we are the kings of post. So, but I think there has to be a combination. Art, अगर true definition अगर देखी जाए, then the definition of art is using both creativity and skill and bringing it together. उसका amalgamation ऐसा हो कि लगे ना कि कोई की stitches नजर ना आए, इतना वो evenly हो, इतना smooth हो, combination आपकी creativity का और आपके skill का, and they go hand in hand. Some people feel that yes, they have a good camera, they have a good eye for that, but they are weak, you know, at using some skills like Photoshop या जो भी tool हो, tools come and go, कल को कुछ और आ जाएगा. Exactly. But at the end of the day, over reliance on the tool is also, I believe, a bit of injustice. Exactly. To the creative process. Absolutely agreed. There has to be a thought process. And वही वाली बात है कि if something was shot for a certain reason और वो client ने आपको बोल के, you know, 100 changes करा दिए हैं, और वो visual जो actually photograph हुआ था वो बचा ही नहीं है, so there's no point then, you know. Then I could have just bought like 10 images from stock photos और उनको साथ में जोड़ के मैं visual बना लेता. What was the whole point of photographing the whole scene and doing the whole brief and doing the whole exercise, you know?
So ये तो है. Well, it's a never ending हाँ, debate. yeah. क्रिएटिव एंड कमर्शियल का तो वो एक जिंदगी भर चलता ही हाँ, वो एक रहेगा. अलग ही डिबेट है, हाँ. लंबी डिबेट है वो. अच्छा इस्माइल, थोड़ा सा आपकी तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं. हमने जनरल अंडरस्टैंडिंग समझी कुछ चीजों की आपसे. योर जर्नी, राइट? सो क्या क्या अगर मैं समझना चाहूँ आपके चैलेंजेस रहे, और आई थिंक चैलेंजेस बहुत तरीके के होते हैं, बट 2-3 बेसिक चैलेंजेस. And you also gave some advice to people on how to go about learning, right? So आपने किस तरह से अपनी learning maintain की है through all this while, formally या informally जैसे भी. But I think it'd be interesting to learn about your journey in terms of challenges and learnings you've done. So academically academically I did bachelor's and then master's in business administration. जिसका कोई ताल्लुक नहीं है जो मैं अभी कर रहा हूँ उससे. so I think जो एक चीज जो मैंने कंसिडर की और जो मतलब मुझे ख्याल बाद में आया रेट्रोस्पेक्ट में, वो ये था कि I did not speak to enough people while I was growing up. Okay, what areas should I pursue, or what things I can look at. So I just feel कि the sooner you find out कि तुम्हें क्या मजा आता है करने में, the better and the more fun the journey is. Because आपको फालतू में 4-6 साल रगड़ा नहीं लगना पड़ता for nothing. जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने बीबीए किया 4 साल, 2 साल एमबीए किया, फिर मैं एडवर्टाइजिंग में गया. एडवर्टाइजिंग में तकरीबन 4 साल गुजारे. एंड आई केम टू अ पॉइंट कि जहाँ पे मैं बिल्कुल इतना नम हो गया था कि मैं सुबह उठता था. जो मेरी लास्ट एडवर्टाइजिंग रिलेटेड जॉब ऐसी थी कि आई वुड जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग, और हम लोग की जो मेन ऑफिस थी, हेडक्वार्टर्स था, वो सिंगापुर में था. तो वो लोग 4 घंटे दुबई से आगे हैं. एंड दे यूज्ड टू स्टार्ट एट 9 AM. इसका मतलब है कि मेरी ईमेल स्टार्ट हो जाती थी 8, 7, 6, 5 AM in the morning. तो I would have the phone buzzing from 5 AM, and मैं इस ख्याल से उठता था रोज कि यार okay, let's wake up, get this done and get over with this. ये लेवल पे आ चुका था मैं, because I was hating my hating भी छोटा वर्ड है, इतनी चिढ़ हो गई थी मुझे अपने overall काम से कि I was done with it. so ये वाला लेवल, आइडियली ये वाला लेवल पहुंचने से पहले आपको कुछ और एवेन्यूज ढूंढ लेने चाहिए अगर if you're not happy with something. Ideally तो ये होना चाहिए कि as you are studying you come across different kind of individuals, talk to them, know them, what did they do. उनमें से बहुत से वो लोग होते हैं जो बहुत यंग एज से किसी प्रोफेशन में काम शुरू कर चुके होते हैं. And so you don't have to always align with how they think or how they behave a certain way, but there's no harm in talking to them and understanding how they got about and how they what do they think about different things, because वो लोग more experienced हैं, वो लोग आपसे पहले professional world में enter हो चुके हैं. And they understand the ins and outs and things. Yeah. So I think number one thing would be speak to people, and it does not have to be कि आप उनसे दोस्त हो या या आप उनसे 100% हर बात पे agree करो. It doesn't have to be. No one has to agree to anyone. It's a free world. So just sorry. And the advantage of doing this, in fact, the advantage of having groups like Rawanee and other people who are contributing to this effort, कि सबसे बच्चों को तो सवाल यही होता है ना कि यार ये लोग मिलेंगे कहाँ? How am I going to find exactly people? Well, that's where you're going to find people, right? Or in a very safe environment, in a very non-judgmental environment. क्योंकि
you don't know where people are coming from. Exactly. आप कहीं से भी आ रहे होंगे, अगर मैं फोटोग्राफी स्टार्ट कर लूं तो लोग पूछेंगे हाँ वो तो ठीक है, आप करते क्या है मगर तो ये वाला वो सिलसिला सवाल भी एक आता है। होता है ना कि अच्छा ये तो एक हॉबी चल रही है अपनी, अब वैसे क्या हाँ। करते हैं. सो आई थिंक ये जो पॉइंट है आपका ये बहुत रिलेवेंट है. जो लोग आज शुरू करना चाह रहे हैं, तो बिफोर यू गेट इनटू स्टफ, बिफोर यू मेक द मिस्टेक्स जो कि ऑलरेडी लोग कर चुके हैं, मेक मिस्टेक्स, मेक योर ओन मिस्टेक्स, बट मेक सम न्यू वंस. Yeah. जो Exactly. ऑलरेडी हो चुकी हैं वो तो कर लेना, वो तो वो देख तो चुके हैं रिपीट ऑलरेडी. करने से फायदा नहीं है. और वही बात है ना कि if you if you speak to more people तो वो थोड़ा आपको डाइवर्स पर्सपेक्टिव भी मिलेगा ना, ना कि खाली अपने घर का या हाँ. अपने दोस्तों का, you know. So Horizon Yeah. expand. Diverse exactly वो perspectives थोड़ा बड़ी जरूरी है. it's वो बहुत जरूरी है, and especially when you're growing up or when you're entering a new area. So जिसके बारे में आपको नहीं पता, so of course you need to have as much information, as many tools to have in your bag. But whether you'll fail or pass doesn't matter. But nobody knows, and that's not the point. The point is to actually venture and take the step and do it. And Perfect. ठीक है. If you fail, you come do it again or find another No, route, no, but do absolutely it. agree. No, it's important to, remove that fear of failing. As long as you're Exactly. failing forward, it's all good, and that's how you learn, right? So, And वही बात है कि अभी इस टाइम में it has never been more important to be yourself, because we when we are growing up, when we meet people, वो हमेशा आपको जज कर रहे होते हैं कि अच्छा नहीं ये फील्ड अच्छी नहीं है, इसमें पैसे नहीं मिलेंगे, इसको लोग बुरा बोलते हैं. I mean वो अगर वो आपको कोई फील्ड नहीं चूज करने दे रहे, will they take care of you for the rest of your life? Will they take care of your family? I mean, you have to do it, right? So you should better do it what you like rather than उनके ख्याल में घूमते रहो के वो shit. Yeah. absolutely. क्या बोलते हैं? Absolutely. Acha, Ismail, just on that, are there any creative problems that you're very passionate about solving through your art form, through your creative form? Yeah, any creative ideas that you're very interested in pursuing, again, related to the space that you work in? I honestly, I don't have a lot figured out. And that's how most of the things have been in my life, mostly. Summary. I don't put a lot of honestly, if you ask me this, it's a really hard question for me to answer, because one day at a because Sorry. one day at a time. Didn't intend to be a hard question for it to be a hard question. Especially in 2020, one day at a time. Exactly. so yeah. That's all right. I think थोड़ा सा on the spot कर दिया मैंने आपको इस सवाल से, but I thought it's worth understanding. I guess the 2020 की बात हो रही है. If you were, I don't know, how have you gone about creatively expressing yourself in 2020? मैं सोच रही थी कि बाकी लोगों के लिए शायद मुश्किल था, but आपके लिए शायद in a way आसान रहा होगा. लोग कम है, बाहर नहीं, घरों में अपने आप जाए बाहर और buildings की pictures दें. Was it like that? Was it easier? It was. I would say कि शुरू में ऐसा ही था. शुरू में I was like, okay, now I have all the time in the world. क्योंकि खैर यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था दुबई में, which was very intense. तो आपको बाहर निकालने दिन में सिर्फ आपके पास 2 घंटे होते थे बाहर निकलने के, और फिर वो भी उन्होंने अडेप्ट किया, चेंज किया कि every 3 days आप निकलेंगे 2 घंटे के लिए. तो ये था कि ये तकरीबन 1.5-2 महीने इस तरीके से निकल गए पूरे घर में बैठे बैठे. so ये तो नहीं था कि initially मेरा भी यही माइंड था कि यार now that we have all the time, I would pursue my personal project. ये वो 2-3 चीजें मेरे माइंड में थी, वो मैंने थोड़ा बहुत काम उस पे किया, लेकिन I did not see it coming well enough for myself and for my own liking. तो वो शेल्फ हो गया है वापस साइड पे. so ये होता रहता है, मतलब it's a
it's an ever developing, ever evolving process. You know, sometimes you think ek cheez achhi hai, and then you start doing it, and then you don't like it, and so. But ये है कि कई लोगों ने इस time को बहुत creatively use किया. कुछ लोगों ने, you know, they shot stuff, especially a lot of fashion photographers and stuff, when they could actually not go anywhere. They did Zoom पे उन्होंने fashion shows किए, fashion shoots किए. So बहुत बहुत interesting काम किया है इस time. Exactly, हाँ, वो इस time बहुत कुछ लोगों ने बहुत interestingly काम चीजें की हैं. Unfortunately, I've not been one of them. रवानी भी इसी इसमें बना है, जो हमारी community है रवानी. So amazing, you know, COVID times में that's how it came about. You know, we were like, we need creative inspiration, like-minded people. Where is our tribe? We need our tribe around us. And so that's great. That's great. I think having constraints is key to creativity. खुली अगर आपके आजादी हो सब कुछ करने की, तो टाइम बहुत जल्दी आप बोर हो जाते हैं. मजा तब है कि जब आपके पास limitations हो, constraints हो, and then your, you know, the rebellion side of you comes out and कहते नहीं हम ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं हम ऐसा भी कर सकते हैं. That's the human thing. That's the fun part. You know, that's when they come out and they fight, और वहां से फिर नई नई चीजें निकलती हैं. But thank you so much, Ismail. Thank you so much for your time. Yeah. Pleasure. And it was wonderful talking to you as always. As mentioned at the beginning, likewise. The whole purpose of this conversation is just to open doors to new fields, open windows into new people जिनको normally अगर highlight ना होते हो, या अगर कोई photographer बनना चाहता है या ना भी बनना चाहता हो, just for creative inspiration. ये भी एक थोड़ा I think हम बहुत ही उसको narrow scope कर देते हैं when we feel कि नहीं सिर्फ ये क्योंकि हम photographer का interview कर रहे हैं, तो only people who are interested in photography should tune in. The overall creative process, जो overall ये bacteria है, ये होना चाहिए. बाकी तो आप कोई भी creative expression करेंगे, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. That's the whole idea of having this conversation. So once again, thank you, Binish. Over to you. Yeah, no, thank you. It's wonderful, you know, knowing you and about your journey. I was just thinking if people who would be interested in learning a little bit more about, you know, photography or especially architecture related, or perhaps they can reach out to you on Rawanee. You know, that would be great. Absolutely. Yeah. No, absolutely. I'd be happy to, you know, अगर कोई किसी के पास कोई questions है या कुछ पूछना चाहते हैं. Although I don't know a lot, but जितना मुझे पता है, I'd be happy to, you know, share. That's the point of this community. No, that's fantastic. तो आप गाना नहीं गा रहे before हम आपको खुदाफिज करें? मैं singer नहीं हूँ. Singer आबिद है, मैं नहीं हूँ. अभी तो हमें रिसेंटली पता चला है कि बीनेश को शौक है भाई. ये कहाँ से आया? ये तो ऐसी आबिद को like that. स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं. Let me send you that. Abid is working on his single these days. अभी रवानी पे भी उन्होंने शेयर किया है. अभी मुझे भी कभी कभार वो शेयर करता है कुछ चीजें. हाँ, it's अच्छा टाइम अंदाजा लगा लें हम. Perfect. No, thank you once again, Ismail. Thank you so much for your time. It was lovely thank you. All right, guys. Thank you, guys. Bye now. All right. Take care. Take care. Bye-bye.